She may be a Yadav Bahu, but not exactly in the favor of Akhilesh Yadav. This Yadav daughter-in-law, Aparna Yadav, is charging at Akhilesh Yadav, who has filed nomination from Kannauj. And she says, Akhilesh Yadav fears Modi and is forced to fight from this constituency in Kannauj. Aparna Yadav has said, and we cut across to what she's saying, that Kannauj no longer is a cakewalk for the Samajwadi Party like it probably earlier was when Dimple Yadav also had contested. Aparna Yadav has said they are afraid of Modi, forced to contest this election, and earlier it used to be a cakewalk, not anymore. India Alliance is forced to field a senior leadership now in elections. Earlier, remember, the nephew of the Yadav family had been mentioned. समाजवादी पार्टी की बात और पीडी अलायंस और ये इंडिया अलायंस जो भी है, इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूंगी, डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। और पहले जो माना जाता था कि भाई केक वॉक की तरह जीत जाएंगे, हम कहीं से भी लड़ जाएंगे, हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जबकि मैं तो ये कहूंगी कि आदरणीय नेताजी यानी मुलायम सिंह जी, जो मेरे ससुर भी हैं, उनकी वजह से जो है बहुत सारी सीट्स सेफ मानी गई, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे और अपने पीपल्स कनेक्ट की वजह से वो उस पे मेहनत करके उन सीट्स को बड़ा सेफगार्ड बनाया। पर उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चस्व स्थापित किया है, कमल का फूल उन सीटों पर भी खिला है। तो मैं ये कहूंगी कि ये सारे जितने अलायंस वाले लोग हैं, इंडिया अलायंस वाले लोग, ये लोग अब यह तय कर चुके हैं कि मोदी जी को हमें अगर जो है हराना है या हमें जो है इस तरह से करना है कि जो है कहीं उनके मुकाबला हम कर सके, तो हमारी सीनियर लीडरशिप को उतरना पड़ेगा। उस तहत जो है इन्होंने भी अपना नामांकन भरा है। So Aparna Yadav, who's also, remember, a BJP leader, while she's a daughter-in-law in the Mulayam Singh Yadav family. I want to now bring in Abhishek Mishra, who's been tracking the latest on that. Abhishek, nomination may have been filed on Akhilesh Yadav, but a retort coming in from the daughter-in-law, so to say, his sister-in-law. Well, absolutely, Pooja, and she did not waste any time and immediately reacted to his nomination, where Akhilesh Yadav was claiming to the voters and his cadre to get the record number with his favor this time. See, the battle is getting more intense, and the BJP has a realization that not just Kannauj, but the nearby seats, including Mainpuri, Firozabad, Farrukhabad, and all other seats will be very evident and very important. And now Akhilesh on the ground as a candidate will certainly give advantage to the India Alliance. Sister-in-law Aparna Yadav openly challenging it and saying that the work of the Modi government is evident enough, and there is no challenge, is indeed significant in a way that how the BJP is taking this battle. It's going to be a one-on-neck, and Subrat Pathak, who is already a member of parliament from that seat, is already challenging Akhilesh Yadav. So yes, a big fight, and the family member herself, or you say daughter-in-law of Mulayam Singh Yadav, who is now a member of the BJP, is mentioning the name of PM Modi, his work, and saying that there is no battle, and in a way it is getting more heat up with the fact that how Akhilesh Yadav is now on the ground as a candidate and pushing the India Alliance and other candidates in this political space. Yes. Abhishek, stay on with me, because let's listen in again to what Aparna Yadav, the BJP leader, who's also the daughter-in-law of Mulayam Singh Yadav and the family, and a sister-in-law to Akhilesh Yadav, this time, however, said it used to be a cakewalk for Samajwadi Party in Uttar Pradesh, not anymore. समाजवादी पार्टी की बात और पीडी अलायंस और ये इंडिया अलायंस जो भी है, इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूंगी, डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। और पहले जो माना जाता था कि भाई केक वॉक की तरह जीत जाएंगे, हम कहीं से भी लड़ जाएंगे, हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जबकि मैं तो ये कहूंगी कि आदरणीय नेताजी यानी मुलायम सिंह जी, जो मेरे ससुर भी हैं,
उनकी वजह से जो है बहुत सारी सीट्स सेफ मानी गई, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे और अपने पीपल्स कनेक्ट की वजह से वो उस पे मेहनत करके उन सीट्स को बड़ा सेफगार्ड बनाया। पर उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चस्व स्थापित किया है, कमल का फूल उन सीटों पर भी खिला है। तो मैं ये कहूंगी कि ये सारे जितने अलायंस वाले लोग हैं, इंडिया अलायंस वाले लोग, ये लोग अब यह तय कर चुके हैं कि मोदी जी को हमें अगर जो है हराना है या हमें जो है इस तरह से करना है कि जो है कहीं उनके मुकाबला हम कर सके, तो हमारी सीनियर लीडरशिप को उतरना पड़ेगा। उस तहत जो है इन्होंने भी अपना नामांकन भरा है। So this, of course, remember, is one of the big stories coming in from Uttar Pradesh, a state that sends out about 80 seats and can clearly swing the election either way. Let me now take you to other stories coming in from the Congress camp. Now, Sam Pitroda may have made a mention of inheritance tax and got distance from the Congress party. But the wealth survey and inheritance tax remark has been immediately picked up by Prime Minister Modi. Again, he launched a scathing attack at the Gandhis for even thinking about such a tax for India and Indians. Training guns at the Gandhis, at the Nehru family, and highlighted that when Indira Gandhi when India had the inheritance tax about 40 years ago, Prime Minister Modi claimed that former PM Rajiv Gandhi abolished the tax. But that was only to get an access to his mother, former PM Indira Gandhi's wealth and assets. He's further added that Congress wants to give people's wealth after their death to their vote bank. It was yesterday, remember, when Congress's Sam Pitroda had suggested that about 55% of a person's wealth should be taken by the government. He made a mention of a USA, where he said there is an inheritance tax specifically for the super wealthy. Congress distanced itself from the same and said that we are not planning any such tax like that. वो जीते जी तो छोड़िए, ये स्वर्गवास के बाद भी, मृत्यु के बाद भी आपकी जो बची हुई संपत्ति है, जो स्वाभाविक रूप से आपके बेटे बेटी को मिलनी चाहिए, वो भी आप नहीं दे पाओगे। आपने कितनी ही मेहनत करके बच्चों के लिए इकट्ठा किया होगा। कांग्रेस वाले कहते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो वो भी डब्बे में से गुल कर दिया जाए। ऑफिशियली कहते हैं आपकी कमाई का आधे से ज्यादा कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो ये सरकार छीन लेंगी। और इसलिए कांग्रेस आप पर इनहेरिटेंस टैक्स, आपकी विरासत पर टैक्स लगाना चाहती है। सबसे पहले कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से हिंदुस्तान में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये तो कानूनी नहीं है, इसको रद्द करो, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्कीम को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया जिन्होंने आपको पैसा दिया उनके नाम दो और कौन सी तारीख पे पैसा दिया वो बता दो। किसी कंपनी पे सीबीआई की रेड होती है, कुछ ही दिन बाद वही कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए देती है, सीबीआई की इंक्वायरी खत्म हो जाती है। जो सड़क पे एक्सटॉर्शन, गुंडे एक्सटॉर्शन करते हैं ना, हाँ, ये उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर शुरू कर दिया है। वो हमेशा यही बोलते हैं मजबूत इंडिया बना। कई के लिए भाई? तुम्हारे लिए। तुम तो डिक्टेटर हो, तुम डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते। हमारे अच्छे संस्थाएं जो है तुम बिगाड़ रहे हो। सीबीआई बिगाड़ रहे, सीईसी बिगाड़ रहे, ईडी को तो पूरा अपना हथियार बना लिए। उसमें सब अच्छे अच्छे लोगों को, कांग्रेस वालों को भी डराना, दूसरे पार्टी वालों को भी डरा डरा के आप उनको कहां लिए? अपने झोली में डाल लिए। विरासत कर हमारे एजेंडा में नहीं है, और जो कोई कहता है कि हम विरासत कर लाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। 1985 में नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने
उस विरासत कर को हटाया था। और 2014 और 2019 के बीच में अरुण जेटली जी, जयंत सिन्हा और बीजेपी के कई समर्थक, शुभचिंतक, बुद्धिजीवी ने विरासत कर का वकालत उन्होंने की। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस न्याय पत्र में धन पुनर्वितरण की बात होती है। मैं उनको चुनौती देता हूं। हमारे 50 पन्ने हैं, 50 पेज है ये मैनिफेस्टो, ये न्याय पत्र। इसमें एक शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया है जो कहता है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। ना संपत्ति सुरक्षित, ना संतान सुरक्षित, ना सीमा और सरहद सुरक्षित, और ना ही सनातन सुरक्षित। तो कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के राज में कौन सुरक्षित रहेगा? कोई नहीं रहेगा। इसलिए आज राहुल गांधी जी के मेंटर, गाइड, फिलोसफर सैम पिट्रोडा जी के बयान से बहुत स्पष्ट हो गया, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी स्पष्ट तौर पर दिखता है कि कांग्रेस आम जनमानस की मेहनत की कमाई के पैसे को छीनना चाहती है, उनके हक छीनना चाहती है, और उनकी मौत के बाद भी उनकी परिश्रम का पैसा उनकी संतान को नहीं बल्कि कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है, और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है, और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। I now bring in my colleague Milan Sharma for the latest. She's joining us from Delhi, where the Congress headquarters are. It's very interesting, Milan, isn't it? Because constantly it's the Congress party that is on defensive, and Prime Minister Modi throwing one punch after another. How do you see the Congress strategy playing out? 2 phases, and the second phase now coming in. So 5 more to go. How do you think the Congress party or the opposition is getting its act together to charge at the government? Well, Pooja, it's a dilemma for the Congress party, certainly, and especially after the statements that Sam Pitroda has given on the inheritance tax. The party is finding itself on the back foot, and now the Congress party has continuously been harping on the fact that there is no mention of the inheritance tax in their manifesto, and there is no mention of wealth redistribution either in the Congress manifesto. But since the line has been picked up by Prime Minister Modi, the BJP strategy has also been to corner the Congress party on the inheritance tax, which was earlier known as estate duty. Even though it was abolished by Rajiv Gandhi in 1985, the BJP has targeted the Congress party by saying that it was done so that Indira Gandhi's assets could be given to her grandchildren. And these are some published reports that the BJP is citing as, evidence. But the Congress party says that we had abolished it in 1985 because it costed more to the exchequer and the government to collect these sort of taxes from the rich at that point, and therefore it was abolished. Now, between the inheritance tax and the Mangal Sutra narrative, the Congress party will need to up its ante because, how they are going to convince the voters that this is not something that the Congress party is harping to do is what they are trying to, do at the moment. And the Congress saying continuously that this is not part of our manifesto. But they've also said that the Prime Minister is actually promoting the Congress's manifesto, albeit, for reasons that, are false. And that is the narrative that needs to be countered by the Congress party at the moment, at least ahead of the second phase of polling. Of course, Rahul Gandhi in his campaigns has been talking about how 21 super rich billionaires have been created in India in the last 10 years. And that seems to be a problem where the distribution of wealth between the super rich and those that are in the upper middle class and lower middle class happens to be inequitable. They've not mentioned it in the manifesto, but of course the star campaigner has been talking about it in all his rallies across. Pooja. So is it the monopoly of the super rich,
Or are these the wealth creators that this new generation has in the country? Because it remains to be seen how the parties make that mention at this time. Milan, I appreciate you joining us for now, but stay on, because Prime Minister Modi has used this specific mention of the wealth survey and that it could possibly lead to, so to say, as he's using the word X-ray, quoting a Congress leader. Prime Minister Modi launched a scathing attack claiming Rajiv Gandhi, former Prime Minister, evaded the inheritance tax specifically and got that abolished because he was after the wealth and assets of his mother, former Prime Minister Indira Gandhi. What did he say about it? Listen in. पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। अब वहां मामला निपट गया तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। And now listen in and let's go outside perhaps Uttar Pradesh and other states as well. I now bring in an exclusive conversation with former Jammu Kashmir Chief Minister Omar Abdullah, who's also from the National Conference, about his party's prospects, specifically after the 370 that was abrogated and J&K also faces polls. What has he said and what are the recent reactions of Prime Minister Modi also? Here's Omar Abdullah speaking to India Today. सर, जो आप यहाँ आज बैठे एक कनेक्ट बनाने की कोशिश की, क्या कहेंगे इसके बारे में? कैसा है कोशिश की? मतलब अपने वर्कर्स के बीच में रह के कनेक्ट बनाने की कोशिश की। इसमें कोई बनाने वाली बात ही नहीं है। ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सियासी पार्टी नहीं, एक खानदान है। हम सबका एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन है, एक रिश्ता है। ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पहले से बना हुआ है और इंशाल्लाह मरते दम तक बना रहेगा। सर, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बातें की अपनी तकरीर में, काफी कंट्रोवर्शियल हुई, काफी रिएक्शंस उसके आए। आपको कैसे देखेंगे आप? आज हम यहाँ मैंडेट भरने आए हैं। जहाँ तक वजीर आजम साहब की बातों का जवाब देना होगा वो हम कैंपेन ट्रेल पे दे देंगे ना। जी, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को अब ऐसा लग रहा है कि जो पिछली परफॉर्मेंसेस थी वैसी नहीं होगी और कोई जाहिर सी बात है कि वजीर आजम साहब का ये बयान या ये तकरीर जो है पहले फेज के पोलिंग के बाद सुनने को मिली। शायद जो वो उम्मीद कर रहे थे वोटों की और सीटों की, शायद पहले फेज में उनकी उम्मीद जो है वो पूरी नहीं हुई और इसलिए इस तरह की बातों पे वो दोबारा आ गए हैं। So according to Omar Abdullah, there may not be many seats that will possibly be grabbed by the BJP and the NDA. Let me now take you to the big quota war. Started from Karnataka, but it has now become a big highlight of an election showdown issue. Karnataka quota war, which is about 4% quota to the Muslims that have been there for years now in the state of Karnataka. But because the caste panel also recently said the categorization of entire Muslim community as a backward class has triggered a massive storm politically. Prime Minister Modi specifically lambasted the Congress party and this time again accusing it that they have given away the OBC quota share to the Muslim community when it comes to reservations in Karnataka specifically. Prime Minister Modi has said they are snatching away the rights of other underprivileged groups and that Congress wants this Karnataka model to be implemented across India if they win. Prime Minister has attacked the Congress, saying that it was them who gave OBC status to the Muslims illegally and that it was just appeasement politics, referring to the Congress party.
But Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has been one after another giving and putting out, as he calls it, the fact check, saying that one, this quota has been there for 30 years at least, and Prime Minister's attack saying that his remark is clearly stemming from ignorance. Siddaramaiah said Prime Minister must either substantiate or apologize. He's pointed out that it was former Prime Minister Deve Gowda who implemented the Muslim reservation in the Karnataka state, and nobody had objected to it back then. He's also saying that Prime Minister Modi saying this and in such a manner does not befit his position. उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। अभी ओबीसी घोषित कर दिया तो बहुत बड़ा तूफान हो गया। यानी वहां कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया। अगर कांग्रेस आती है तो ये सारी सुविधाएं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और सामान्य वर्ग के गरीबों को नहीं मिलती। कांग्रेस की चले तो गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ भी धर्म के आधार पर देती, क्योंकि कांग्रेस तो डंके की चोट पर यही कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। So that remark that was made by former Prime Minister Dr. Manmohan Singh, constantly being reiterated by Prime Minister Modi as well. I want to bring in Anaga Keshav, from Bengaluru. Anaga, go ahead, because very interestingly, and I would say that more than other Congress leaders who are not coming out as much with explanations on retorts and to make it all clear, it is Chief Minister Siddaramaiah of Karnataka, who's also a Congress leader, of course, is constantly putting it on camera, on Twitter, explaining it. How has the Karnataka Muslim quota war become the big highlight of the issue? Go ahead. Well, Pooja, India Today too fact-checked Prime Minister Modi's claims that it was Congress that first of all put Muslims under, under OBC quota. We made it very clear, fact-checking the Prime Minister's claims that it was Deve Gowda in the year 1994 that first included Muslims under OBC quota. Subsequently, last year, under Bommai's leadership, Muslims were pushed from OBC quota to the EWS section, which was later stayed by the Supreme Court. And now the Prime Minister has, during an election time, he has stated that it was Congress who did it, but in reality it is his own ally, former Prime Minister H.D. Deve Gowda. When he was in power in the year 1994, he was the one who pushed OBCs under OBC quota. And the Congress in Karnataka has reacted negatively to the NCBC's comment as well, stating that they are in fact parroting what the BJP wants. It's the election time and everything is happening exactly 30 years later. Why is it that it's happening only during elections? After that too, 30 years is the big question that the Congress in Karnataka is raising. All right, Anaga Keshav telling us what's unfolding on the ground, because this Karnataka Muslim quota, which is the 4% reservation for Muslims, that Siddaramaiah also says exists in the 2B category, has become now the big election issue. But because the netas are speaking one by one, whether it's Rahul Gandhi, Prime Minister Modi or the party leaders, Election Commission has taken cognizance, one of Prime Minister Modi's speech and also of Rahul Gandhi, based on complaints that have come in from both the parties. The EC has taken cognizance of allegations that there's been a violation of the Model Code of Conduct made as in those speech by Rahul Gandhi and by Prime Minister Narendra Modi. So the election panel has sought a response. Both the party chiefs, which is Mallikarjun Kharge of the Congress Party and JP Nadda of the Bharatiya Janata Party, will have to now respond by the 29th of April, I'm told, which is at 11 a.m. They have to, which is the deadline, and submit about why and what was said. Election Commission has asserted that top brass words have dire consequences.
Star campaigners need to behave while they deliver a speech in political rallies. Election Commission's action has come after both the parties have complained over another party's leader. Aishwarya Paliwal has been tracking all of that as well. Aishwarya, do tell us if you have the clarity and confirmation about what speech has become a problem of Prime Minister Modi and Rahul Gandhi that complaints have been filed, and what happens, what is the procedure like when Election Commission has said, send us a reply, why was this mention made? Well, let me tell you, Pooja, when we speak about Prime Minister, what he spoke about, when he said that this is a place, when he spoke about Rahul Gandhi and he said that these people do not know what they want, that is one of the things that the Congress party has picked up. All the videos were seen by the ECI, and after that, they now understand that they want a response. The response will now be given to them, and after the response, further course of action will be taken by the ECI. This is the normal way. The ECI is now saying that we will have to vet what both the parties tell us, and only after that a final decision will be taken. But 11 a.m. is the deadline that has been given to both the parties, and now they'll have to submit a response by 29th of April. And also a quick mention here, Aishwarya, about EC saying, irrespective of whichever the leader is, speak in a responsible manner. You're the senior most leader of that party. Star campaigners, Pooja, that is exactly what the ECI has said, and said that you need to make sure that the lines that you speak, because you are speaking with thousands of people, lakhs of people, you need to make sure that whatever you speak, you need to vet every word. That's something that the top leaders of both the parties need to very carefully look at. Your words can have dire consequences, so as leaders, irrespective of which party you belong to, speak in a manner that befits your position as well. Thank you so much, Aishwarya Paliwal, for tracking the latest on that. We have big breaking news coming in. Let's take a look at that. It's an ugly personal attack on Prime Minister Modi coming in from Sanjay Raut. He's the Sena UBT faction MP, and he has said, Modi insults Mangal Sutra in his own house. It's a big personal jibe being thrown by Sanjay Raut, who's the Sena, the Uddhav Balasaheb Thackeray faction member of parliament, has been vocal critic of Prime Minister Modi. He says Modi should not preach on the Mangal Sutra, which is a symbol of a married woman. And he says Modi government has snatched lakhs of Mangal Sutras, and Modi has insulted the Mangal Sutra in his own house, he says. Listen in. विकास की बात करिए मोदी जी ने, वो मंगलसूत्र पर आ रहे। इस देश में महिलाओं की मंगलसूत्र की लूट सबसे ज़्यादा अगर हुई है तो मोदी जी के राज में हुई। वो 5 साल आगे क्या होगा हम बाद में देख लेंगे, लेकिन आपके राज में लाखों करोड़ों महिलाओं का मंगलसूत्र एक तो गिरवी रखा गया है या बेचा गया है। मणिपुर में क्या हो रहा है, उनके मंगलसूत्र के बारे में बात करो। जंतर मंतर पर महिलाओं के मंगलसूत्र पर हाथ डाला गया था, महिला रेसलर्स। मोदी जी को ये याद नहीं। जो व्यक्ति अपने घर में मंगलसूत्र को प्रतिष्ठा नहीं दे रहा है, वो दूसरों की मंगलसूत्र के बारे में ठेकेदारी मत करिए। Now, of course, Sanjay Raut has been controversy's favorite child as well, specifically for the words he chooses to speak. Now, recently, there was another shocking statement that he had given. Apart from this personal attack at Prime Minister Modi, Sanjay Raut had referred to Navneet Rana, who is Amravati sitting MP. She's now also BJP candidate. He had referred to her as a nache or dancer, where he used that word and then the crowd cheered on. ही लढाई देशाची, ही लढाई बळवंत वानखडे आणि ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे, डान्सरशी नाही आहे, बबलीशी नाही आहे। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र आहे, लक्षात घ्या। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र, ही लढाई मोदी विरुद्ध उद्धव ठाकरे, ही लढाई मोदी विरुद्ध शरद पवार, ही लढाई मोदी विरुद्ध राहुल गांधी आहे। So could this, at least personal mention of Prime Minister Modi and the Mangal Sutra, could it actually become a big issue? Will Prime Minister Modi react to it like Lalu Prasad Yadav had thrown the Parivar jibe at Prime Minister Modi? I want to now bring you some other stories that are making the rounds as well this election season. Let's begin. Union Home Minister Amit Shah
offered prayers at the Kal Bhairav temple in Benares ahead of the second phase of polling that is set to go for voting tomorrow. Visuals of Amit Shah performing the aarti and greeting the people around. RJD's Tejashwi Yadav alleging BJP President JP Nadda brought 5 bags of cash to distribute among voters during his recent visit to Bihar ahead of the second phase of elections. While Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal continues to be in custody, Sunita Kejriwal will join AAP's Lok Sabha campaign in Delhi. According to our sources, she will hold roadshows this weekend in the absence of Delhi Chief Minister and will campaign, of course, for the party candidates and for the India bloc, which has decided with that seat sharing. Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy files his nomination from Pulivendula Assembly constituency. Jagan Mohan Reddy was accompanied by party candidate for the Kadapa Lok Sabha seat Y.S. Avinash Reddy and others. In the latest, popular YouTuber Manish Kashyap has joined the Bharatiya Janata Party today in the presence of BJP leaders Manoj Tiwari and Anil Baluni. Kashyap maintains a strong presence on YouTube, and you must know he has about 8.75 million subscribers on YouTube. After joining the BJP, he said, Lalu Yadav's family looted and destroyed Bihar. Uttar Pradesh, that's clearly heating up. Today, Samajwadi Party's leader Akhilesh Yadav filing his nomination from Kannauj. Kannauj was very interesting, remember, because Akhilesh Yadav filed his nomination today. But this was after Samajwadi Party had announced that Akhilesh Yadav's nephew, Tej Pratap Singh Yadav, will be the one to then be fielded. However, now Akhilesh Yadav is the one that has been decided. He has filed his nomination. But interestingly, he shared an old picture also of the nomination that had been filed. And we'll put that on the screen as well. Amid all of this, Samajwadi Party's former ally. So that's a picture on your screen that he has shared a younger Akhilesh Yadav filing nomination. But Samajwadi Party's former ally, RLD, has hit out at Akhilesh Yadav. Jayant Chaudhary has said that there was only confusion in the Samajwadi Party and there is always uncertainty within the SP camp. Akhilesh Yadav's wife, Dimple Yadav, just to jog your memory, was the one who lost from Kannauj in 2019 in the last elections. So it will be a big responsibility on Akhilesh Yadav's shoulders to ensure that he gets this victory. But he's up against incumbent MP Suprat Pathak. यहाँ के लोगों की मदद, यहाँ के कारोबार, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए और जो विकास रुक गया है, जो विकास थम गया है, जिस विकास को जानबूझ करके बीजेपी के लोगों ने इसलिए रोका क्योंकि समाजवादियों ने वो काम शुरू किए थे। बीजेपी के लोगों ने नकारात्मक राजनीति की, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका, यहाँ की जनता एक बार फिर प्यार, मोहब्बत, मिलीजुली संस्कृति, आपस में भाईचारा, उसका दौर शुरू करेगा। अखिलेश यादव तेज प्रताप को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। उनके यहाँ कंफ्यूजन है, कौन उतरेगा और कौन लड़ेगा और किसका नामांकन होगा, किसको सिंबल मिलेगा, किसी को मालूम ही नहीं, उन्हें खुद नहीं मालूम। अभी फिर चर्चा चल रही है कि खुद लड़ेंगे। उन्होंने ही तो इस देश का ये स्थिति किया। पाकिस्तान एक बड़ा हिस्सा हमारे देश का एक टुकड़ा हमसे अलग कर दिया। वहां हमारे 27% जो हमारी आबादी थी आज खत्म हो गई। आज कोई वहां नाम लेने वाला नहीं है, मंदिर जाने वाला कोई पाकिस्तान में बचा नहीं है, कोई जाता भी नहीं है। 14-15 साल की लड़की उठा लिया जाता है, जबरदस्ती 70 साल के बुढ़े के साथ निकाह करा दिया जाता है। ये हो रहा है वहां पाकिस्तान में, यही इनकी हिंदुस्तान में करने की तैयारी है। और तभी अखिलेश जैसे नेता इन आतंकियों को, इन माफियाओं को संरक्षित करते हैं और इनको पोषित करते हैं। So staying with the state of Uttar Pradesh, while there are about 80 seats, the biggest state for Lok Sabha, but Amethi will be one big constituency that remains a big focus. And the reason is, according to speculation that's rife, Gandhis are in all likelihood will be fighting from the family strong bastions that it had been earlier. There has been suspense, though, on both the seats, but sources are telling India Today Rahul Gandhi may fight from Amethi, Priyanka Gandhi Vadra likely from Rai Bareli, so she could also now take a jump finally in the electoral battle. Rahul Gandhi, we are told, if this is announced, will file a nomination by the 1st of May and will likely reach Amethi this Saturday, this weekend, but that means after Wayanad elections are over, and that is what is being waited for, and then the announcement comes in.
Sources have also said Congress party is planning a big show of strength in Amethi on the 1st of May. There are leaders and the camp and cadre of the Congress party that has already moved toward Amethi and has started to ship and set facilities. But also they could do a detour to Ayodhya, seek blessings from the Ram temple and then head to the constituencies, is what we are told as of now from our sources. It was only yesterday, remember, when Robert Vadra's posters appeared in Amethi. Robert Vadra had expressed inclination, keenness that if the party wants, he's ready to contest elections because people in Amethi want Rahul Gandhi or Congress leaders to contest from the seat. देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। अब प्रश्न अमेठी में ये उठ रहा है कि अगर अब मेरी माताजी की तो सरकार नहीं थी, राहुल जी की माताजी की तो सरकार थी केंद्र में, तो अगर मैं एक साधारण सांसद के नाते क्षेत्र में इतना काम कर सकती थी मात्र 5 सालों में, तो ये क्यों नहीं संभव हुआ कि राहुल जी ने 15 सालों में इससे कम ही कर देते, लेकिन कोई काम तो करते। ये सरल सुविधाएं भी राहुल गांधी दे नहीं पाए, शायद इसीलिए अभी तक कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। एक कारण और भी कि वो इंतजार कर रहे होंगे कि वायनाड में एक बार वोट डल जाए फिर यहाँ आया जाए। अब तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं, और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। हर बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी की चुनौती, प्रधानमंत्री चुनौती, अब चुनौती इंडिया गठबंधन से इनको मिलने वाला है। अब बीजेपी की कहानी खत्म हो चुकी है और निश्चित तौर से वो सीट वो गांधी परिवार के साथ है। कांग्रेस परिवार की सीट रायबरेली लगातार जीतती रही है। अमेठी निश्चित तौर से स्मृति ईरानी झूठ बोलकर 13 रुपए किलो चीनी कहा ना कि बहनों भाइयों कमल का बटन दबाओ 13 रुपए किलो चीनी ले लो, तो 13 रुपए किलो चीनी मिली क्या अमेठी वासियों को? पता लगा लीजिए आप। झूठ बोला, एक भी कल कारखाने नहीं लगे। कब आएंगे राहुल गांधी जी और किस तरीके से चुनाव होने वाला? वो निश्चित तौर से अब वो समय चीजें तय हो रही हैं और जब आएंगे तो आपको सबको जानकारी दे दी जाएगी। ये तय है अमेठी रायबरेली से प्रियंका और राहुल लड़ेंगे? बनारस भी तय है, अमेठी रायबरेली भी तय है। And with just hours to go for the second phase of the Lok Sabha elections, former Chief Minister of Rajasthan, Ashok Gehlot's former OSD Lokesh Sharma has dropped a bombshell claiming Gehlot snooped on the rebel MLAs. Those who perhaps would have wanted to start a rebellion against him were snooped upon. Who is he referring to? Gehlot's ex-aide has claimed that during the 2020 crisis in the state, Gehlot snooped allegedly on some of the rebel leaders and MLAs, including Sachin Pilot, he says, and that instructed him to share them with the media. He's claimed he was told that these were interceptions of phone conversations, but he wasn't sure if all this is legal. Now, charges have been rubbished by Gehlot's minister, but clearly a bombshell of a mention. तो अपन ने तो यूज तो किया जो मैंने तुम्हें दिया था वो यूज किया ना। हाँ सर, अपन ने तो यूज वो किया था। अच्छा, पर यूज के नहीं किया उसको मैंने डाला पेन ड्राइव में डाला यूज को। पेन ड्राइव को मैंने लैपटॉप पे लिया था। लैपटॉप तेरे खुद का है? हाँ। ठीक है। ना अपने आप ही रहता है सर। सीएमआर का लैपटॉप था तुम्हारा था? नहीं, सीएमआर का नहीं था साहब, मेरा था। ठीक है, फिर उस लैपटॉप से मैंने उसको फोन पे लिया। ठीक है। फोन में जब कॉपी हो गया तो मैंने फिर सबको वो फॉरवर्ड कर दिया, जो मीडिया का मेरा ग्रुप बना हुआ है। लैपटॉप से नहीं सर, फोन से, क्योंकि फोन पे डायरेक्ट पेन ड्राइव से आ नहीं सकता था सर। अच्छा ठीक है, लैपटॉप लिया? हाँ, लैपटॉप में लिया। फोन में? फोन पे लिया, ठीक है। तो लैपटॉप से लिया तो वो ड्राइवर का वो तो सब डैमेज कर दिया। वो पिछली बार अपनी बात हुई थी ना, हाँ, उसको पूरा उस डिवाइस को ही मैंने डैमेज कर दिया साहब। 200% सर पूरा। मुझसे पूछा गया कि वो फोन डैमेज कर दिया ना? हाँ, जिस फोन से मैंने भेजा था उस फोन को डैमेज कर दिया था। ठीक है, तो कोई बात है जी। ठीक है, और जो लैपटॉप इसमें तूने डाला था लैपटॉप पे, हाँ, वो भी किसी को दे दो, किसी को। हाँ, उसको भी दे देता हूँ साहब। बाकी उसमें से उसकी हिस्ट्री वगैरह सब डिलीट कर दी थी साहब।
बार समय कौन है ये लोकेश शर्मा? ये आदमी जो फर्श पर था उसको अशोक गहलोत ने अर्श पर बिठा दिया, गहलोत साहब। और जो आदमी कल तक सरकार में था, उनका ओएसडी बनकर, शहर सचिव बनकर काम कर रहा था, अचानक भारतीय जनता पार्टी के दबाव में डरपोक है ये आदमी और ऐसे बड़े बड़े एलिगेशन लगा रहा है। राजा हरिश्चंद्र है क्या? कौन है ये? मैं सबको जानता हूँ इनसे। और किसका फोन टेप हुआ नहीं, मैं खुद कैबिनेट मिनिस्टर था सरकार में। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों साथ घूम रहे हैं, साथ मीटिंगें ले रहे हैं। प्रताप सिंह के, सचिन पायलट के, अशोक गहलोत में कोई दर्द नहीं है। इसका इनकी अशोक लोकेश शर्मा की जांच चल रही है दिल्ली में। अब उस जांच से बचने के लिए पता नहीं बीजेपी तो जा रही है, बीजेपी क्यों परेशान हो रहा है लोकेश शर्मा? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से आम आदमी डरने लगा। तो बेचारा लोकेश शर्मा की भी गलती नहीं है, ये भी पुलिस से बचने के लिए कर रहा होगा सब नाटक।